Hi everyone, I am Priyanka. Today we'll be continuing the same unit of the spectroscopy, that is the microwave spectroscopy. In today's lecture we will be discussing about the diatomic molecule as a rigid rotor. Okay, so before discussing today's topic थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा. Okay, so in the previous lecture we have discussed about the classification of molecules on the basis of the moment of inertia. Right, so let us discuss this topic in detail. So okay, so we have seen the polyatomic molecules, है ना. पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक से ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं टुवर्ड्स ऑल द थ्री एक्सिस, उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो वी हैव सीन दैट वी हैड अलोंग द थ्री एक्सिस वी हैड थ्री मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दे वर दी IA, IB एंड IC. राइट, सो ब्रॉडली हमने मॉलिक्यूल्स को 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया था. द नंबर 1 वॉज द लीनियर टॉप. राइट, नेक्स्ट वॉज द सिमेट्रिक. देन वी हैड द स्पेरिकल. उसके बाद में वी हैड एसिमेट्रिक. Right, linear molecules में we have seen that the one of the moment of inertia is very small, that is it is nearly negligible, whereas the other two were equal. Right, in case of asymmetric top molecules it was divided into 2 categories, that is the oblate and the prolate. Right, in case of the oblate or in case of the symmetric top we can say that यहाँ पे दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वो है कैसे हैं, दे आर इक्वल, और जो थर्ड वाला है वो या तो उनसे छोटा था या तो उनसे बड़ा था. सो इन केस ऑफ द oblate we had IA equals to IB, right, and this was smaller than IC, whereas in case of prolate we had IA smaller than IB equals to IC. राइट, ऑब्लेट जो है वो कैसे थे, इट वॉज दी डिस्क शेप्ड, एंड द प्रोलेट जो है वो कैसे थे, दे वर दी सिगार शेप्ड. राइट, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्पेरिकल टॉप. स्पेरिकल टॉप में ऑल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेर equal. Right, this was the condition, and in case of the asymmetric top none of them were equal to the another one. Right, examples of the linear top are, right, example of the linear top is any diatomic molecule, for example HCl. Triatomic molecule which should be linear, for example we had we can say HCN. Right, these are the examples of the linear top molecules. Symmetric top में we had oblate, so oblate में you can go for benzene, you can go for BF3. Right, and prolate में you should have the tetrahedral molecule kind of, but एक जो एंड रहेगा दैट शुड नॉट बी दी सेम एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव एमोनिया, सो एमोनिया में वी हैव दी लोन पेयर्स. यू कैन गो फॉर CH3Cl, सो एक पोजिशन पे हमारे पास क्या है, हेट्रो एटम है, दैट इज दी Cl, सो दे विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ दी प्रोलेट. स्पेरिकल में वी हैव टेट्राहेड्रल, आइकोसाहेड्रल और दी ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल UF6, CH4 एक्सेट्रा. Right, and in the asymmetric, so asymmetric में none of them are similar, so water is an example of an asymmetric top molecule. Right, so this is all what we have discussed in the previous lecture. So let us move to the today's topic. So today's topic of discussion is the diatomic molecule as a rigid rotor. Right, so whenever we are talking about a diatomic molecule, so it should have 2 atoms, they are separated by a bond. Right, एक bond distance जो है उसमें होगा. So ऐसा कोई भी रोटेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसके न्यूक्लियाई जो है वो एक स्पेसिफिक मीन डिस्टेंस से सेपरेटेड रहेंगे, उसको हम कहते हैं रिजिड रोटर. तो ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है और ये एक स्पेसिफिक मीन डिस्टेंस है जिससे वो दोनों सेपरेटेड हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल जो है वो रिजिड रोटर की तरह एक्ट करेगा.
राइट अब ये जो रिजिड रोटर है ये एक फ्री एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट कर सकता है, राइट. सो दिस मॉलिक्यूल इज इट कैन रोटेट फ्रीली अराउंड दिस एक्सिस ऑफ दिस एक्सिस, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज दी रोटेशनल एक्सिस, राइट. अब इसको अच्छे से समझने के लिए ये एक मॉडल आपके सामने प्रेजेंट किया गया है जहाँ से हम एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहाँ से हम कर सकते हैं. सो यू कैन कंसिडर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल हियर विच हैज़ द suitable masses that is m1 and the m2. So this is the atom A and this is the atom B which are joined by a rigid bar. ये क्या है, this is the rigid bar जिसका लेंथ जो है वो है r. What is the length? Length is the r. So इस वाले मॉलिक्यूल का radius we can say that is the r1 और इसका we can say r2. Okay. So A and B are joined by the length r. So यहाँ पे r जो है वो क्या है, r is nothing but this r1 plus r2. And what are the r1 and r2? r1 and r2 are the distances of A and B from the center of gravity. इसको COM भी बोलते हैं या CM भी बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ मास. ठीक है. सो r1 and r2 आर द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी. Okay, so I hope now you this is clear to you. This is a वर्टिकल एक्सिस दैट इज नथिंग बट दी रोटेशनल एक्सिस जिसके अराउंड ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा. दो एटम है ए और बी, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से r1 है, इसका है r2. And the total distance with which the two atoms A and B are separated is given by r. So this r is nothing but r1 plus r2, right? So now this molecule will have the moment of inertia about the gravity which is defined as I is equals to m1 r1 square plus m2 r2 square. Why is this? Because we have two molecules A and B, right? So this r is equals to r1 plus r2 is equation 1 and this is the equation number 2. Okay, so now since we have the molecule here, you can see the mass is, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास. इसका मतलब ये है कि द मास जो है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पर्टिकुलर पार्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि दोनों ये जो सिस्टम है दिस इज बैलेंस्ड एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट. देयरफॉर यहाँ से हम बोल सकते हैं वी हैव m1 r1 is equals to m2 r2, right? And this particular part is this equation 2, right? Now see here we have r is equals to r1 plus r2 and we have m1 r1 is equals to m2 r2 square. Now if we solve these two equations, that is equation 1 and 2, we can find r1. So let us see how to do this. Now from r is equals to r1 plus r2, first we will find r1. So let us substitute r2 in this equation. So यहाँ से r2 जो है वो हमको मिलेगा r2 is equals to r1 minus of r, right? इसको अगर मैंने इस वाले इक्वेशन में पुट किया, so what I'll get? I will get m1 r1 is equals to m2, r2 की वैल्यू हो जाएगी r1 minus of r, right? If I solve this, I have m1 r1 is equals to m2 r1 minus of m2 r. Okay, so this will be actually r minus of r1. Okay, let me just correct it. Okay, fine. So here we will have r है यहाँ पे, right? So r2 will be r minus of r1. So here also we will have r minus of r1. So here I'll have m2r minus of m2r1. Okay, so let us take r1 towards one side. So I will have m1 r1 plus m2 r1. This will be equals to m2 r, right? So यहाँ से common will be r1.
So we can take R1 common here. So I'll get R1. I will have M1 plus M2 is equals to M2R. Hence, if I take it to the denominator, I will have R1 is equals to M2R upon M1 plus M2. This is nothing but I have got it here. Where is it? Okay, so here you can see I have got R1 is equals to M2 upon M1 plus N2 into R, right? Similarly, if I do for R2, so for R2 मुझे क्या करना पड़ेगा? I will have to substitute R1. So R1 is equals to R minus of R2 अगर मैं करूँगी, so I will get R2 is equals to M1 upon M1 plus M2 into R. Right? So similarly, in this way, by solving equations 1 and equation 2, I will get the values of R1 and the R2. Now, if I substitute the values of R1 and R2 in this equation, that is the moment of inertia equation, so we will have here I is equals to M1 as it is, R1 is M2 upon M1 plus M2 into R, but this is the square. So here we will have M2 square, M1 plus M2 square into R square, right? Plus here we have M2, so here we have M2 and R2 की value is M1 upon M1 plus M2 R. So this is M1 square upon M1 plus M2 का whole square into R square. Right? So now in this equation you can see we have R square यहाँ पे भी and R square यहाँ पे भी. We have M plus 1 square, यहाँ पे M1 plus M2 square. So ये हम common ले सकते हैं. Okay, so in this equation you can see we have M1 plus M2 square and R square is common. Then we are adding the two parts of the above, that is M1 into M2 square plus M1 square into M2. Now you can see M1 M2 यहाँ पे भी है, M1 M2 यहाँ पे भी है. So M1 into M2 we will take it in the common. बच गया यहाँ का एक M2 और यहाँ का एक M1. So we have plus M1. Here it should be M1 plus M2. Okay, so let me just correct it. So here we have M1 plus M2 upon बाकी का as it is. Okay, so that is M1 plus M2 का square. Now here you can see, here it is a square, so this and this square will get cancelled. Okay, so what is remaining? We have M1 into M2 upon M1 plus M2 into R square. Right? We can put this whole part as mu and hence we get the formula I is equals to mu R square. Okay, let us write this equation as equation 4. Right? So in this equation, what is mu? Mu is nothing but the reduced mass of the diatomic molecule. And hence we have got mu is equals to M1 into M2 upon M1 plus M2. Right? Okay, now this equation 4. Equation 4 is I is equals to mu R square. This equation determines or it defines the moment of inertia in terms of the reduced mass and the bond length. R what? R is what? R is nothing but the bond length. It is the distance between the two atoms A and B. So we have got the equation that is I is equals to mu R square. Right? This is an important equation from here. Okay. So in the introductory lecture मैंने आपको बताया था जब भी कोई रोटेटिंग मॉलिक्यूल जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, राइट, वो जब रोटेट होता है तब वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करता है, राइट, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस कैन इंटरैक्ट विद द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोवेव रीजन, है ना. जब ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेशन की वजह से जनरेट हुई है वो माइक्रोवेव रीजन के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के साथ जब इंटरैक्ट करेगी वहां से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी, राइट, और फिर वो एक्साइटेड स्टेट में जो है वो जाएगी, राइट. इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा जो मॉलिक्यूल है वो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, right? So now we have to calculate the energy. Okay? So ये जो rotational energy है, जिस molecule को जो energy लग रही है, right? Rotational motion perform करने के लिए, this can be calculated by solving the Schrodinger equations, right? For
द सिस्टम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट मॉलिक्यूल. जो भी मॉलिक्यूल है उसके लिए हम एक स्क्रॉडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो हमको रोटेशनल एनर्जी जो है वो मिल सकती है. सो हियर EJ, right? EJ, that is the energy that is equals to h square upon 8 pi square I j plus 1, right? So here the values of J can start from 0, 1, 2 and etc. Right? So what is here? Here h is nothing but the Planck's constant, I is nothing but the moment of inertia, and j is the rotational quantum number. Right? So rotational quantum number, j stands for 0, 1, 2. So this is energy at j. If j is equals to 0, this will be E0. If j is equals to 1, this will be E1, E2, E3 and so on. Right? Okay, so usually, so this is the equation for calculating the energy. So EJ is equals to h square upon 8 pi square I j plus 1. So usually in the rotational region, the spectra is generally it is expressed in terms of the wave numbers. है ना, किसके टर्म्स में हम इसको बताते हैं? It is generally expressed in terms of the wave numbers, and hence the equation we can write it as epsilon j. So epsilon gives us the wave number over here. So epsilon is equals to EJ upon HC, right? We know the equation, ये वाला equation आपको अच्छे से याद होगा. E is equals to HC by nu, right? So here nu is nothing but the epsilon. So epsilon j is equals to EJ upon HC. EJ की वैल्यू हमको पता है h square upon 8 pi square I, this HC as it is over here, into j plus 1. राइट, सो क्या होगा अब? ये h और ये h जो है वो कैंसिल हो जाएगा. हेंस वी हैव h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC j प्लस 1. ओके, एंड वेव नंबर है इसलिए इट विल बी सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो उसका क्या रहेगा? यूनिट रहेगा. राइट, एंड व्हाट इज c हियर? c इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, सो इन कॉमन यहाँ पे we can write this part, that is h upon 8 pi square IC. This can be written as b, right? Hence the equation gets simplified to j into j plus 1 b centimeter inverse, right? So what is b here? B here is nothing but the rotational constant. ठीक है, सो b जो है वो क्या है? b इज नथिंग बट द रोटेशनल कांस्टेंट, एंड द यूनिट ऑफ b इज mc पर सेकेंड, और सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो क्या रहेगा? इसका यूनिट रहेगा. ओके, सो वी हैव नाउ सिंप्लीफाइड द इक्वेशन टू एप्सिलॉन j प्लस 1 इंटू b. अगर अभी आपको किसी भी लेवल की एनर्जी जो है वो निकालनी है, राइट, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ओवर देयर. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज b. सो b इज नथिंग बट h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC सेंटीमीटर इनवर्स, राइट. सो इसके पहले जो अपने को इक्वेशन मिला था दैट इज एप्सिलॉन j. व्हाट वाज दैट? दैट वाज द एप्सिलॉन j इज इक्वल्स टू b into j plus 1 centimeter inverse. Okay, this was it. So now we can find out the values, or we can show what are the allowed energy levels over here, है ना. So for different values of j we can calculate the exact value of the energy, okay, in terms of the wave numbers. Okay, so now first we will calculate for j is equals to 0. So for j is equals to 0, this will be 0, 0 plus 1. So the entire terms becomes 0, right? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि for j is equals to 0, मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर रहा है. ठीक है, it means that the molecule is not rotating. So next, for j is equals to 1, we have b into 1, 1 plus 1. So 1 plus 1, 2 into 1 will be equals to 2b, right?
सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल जो है वो उसके सबसे कम एंगुलर मोमेंटम में प्रेजेंट रहेगा. क्यों? क्योंकि उसने अभी अभी रोटेशन जो है वो स्टार्ट किया है. राइट नाउ व्हेन वी हैव j is equals to 3, so we have epsilon 3 is equals to b into 3 plus 1, that is equals to 4. Okay, we did it for 1, right? We did it for 0, 1. So let us do it for epsilon 2, right? That is j is equals to 2. So we will have b into 2 plus 1, that is equals to 3. 3 2s are 6. This will be equals to 6b, right? Then we have E3. So 3 plus 1, that is equals to 4, and 4 3s are, this is equals to 12. So this will be equal to 12b. इसका मतलब we have 0, we have 2b, then we will have 6b, then we have 12b, then we have 4 plus 1 5, 4s are 20, right? So 12 के बाद में we will have 20b. In this way we can calculate the values of the energies at different j values. Okay, so these all the allowed rotational energy levels of, so these are what, these are all the allowed energy levels. So ये जितने भी allowed energy levels हैं इसको हम diagrammatically जो है वो represent कर सकते हैं. So let us see how does it looks. So in the diagram you can see for j is equals to 0 we have okay, for j is equals to 0 we have, okay, let me just write it for you. Okay, for j is equals to 0 this will be 0, right? For 1 this will be 2b, for 2 it will be 4b, for 3 it will be 6b, okay, and above it will be 8b, right? So now you can see the distance between the two energy levels remains constant. 0 minus 2 or 2 minus 0, this will be 2. 4 minus 2 will again be 2. 6 minus 2 will be again be 2. And 8 minus 2 will be again 2. Right? So in this way, you will have the energy levels. Right? This is the increase in the energy. Right? Now if we see the graph between the energy and the intensity, so the intensity may change but the energy gap between the two remains constant, right? The energy, see, this is 2b, this is 4b, this is 6, this is 8, but the energy gap between the two levels that remains the same, that is the 2b. Right? In the next lecture, we'll be discussing about the frequency of these rotational spectral lines and what are the selection rules for the rotational spectra, and we will discuss some of the molecules, diatomic molecules, in this, applying these rules. Okay. So this is all about today's lecture. I hope you guys have understood. If you have any issues, just ping me. I'll be there for you. Thank you.